क्वेश्चन नहीं पूछूं? ओह वाह, वेरी नाइस। ऑलराइट। Learn to manage the time. Don't be managed by time. Hi everyone, this is Shan Hindustani, your English trainer. And आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पर। ये ऐसे फैक्ट्स हैं, यदि आप सीख लेते हैं तो आपके लिए किसी भी व्यक्ति से कंपटीशन करना बहुत इजी हो जाता है इंग्लिश में। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसी चीजें जो सामने वाले की बोलती बंद कर दें। So let's talk our first amazing fact. How many alphabets are there in English? इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? आंसर है 1. People generally get confused and they say there are 26 alphabets in English. The reality is that 26 are letters, and the group of 26 letters is known as alphabets, and that is 1. Second amazing fact. Tell a word which has a single letter. Answer. I. I means मैं. A means एक. Remember, if you say I is a letter, not a word. And if you say A is a letter, not a word. Remember, say I, like these are the words here because these single letters are pronounced as a word and has a different meaning in Hindi. Third amazing fact. Tell a word which has all vowels letter. Answer. Education. Second, equation. Well, now हमारा next, let's talk about the next amazing fact. Tell a word which has all vowels in itself in the sequence. The word is facetious. Facetious. Facetious means mazakia. Next amazing fact is a sentence which has all letters A to Z, 26 letters. It is a quick brown fox jumps over the lazy dog. You can count and you can see. वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, इसमें सारे A से लेकर Z तक सारे ही लेटर्स मौजूद हैं। The next amazing fact is the words which have same letters but the meaning opposite. Listen, answer, listen and silent. Listen and silent दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें लेटर्स सेम है पर इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। वेल, इसी तरह के और अमेजिंग फैक्ट्स को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।